All children play, dance, and learn from all sorts of activities during the course of development. कौन खड़ा था? राजा इंद्र खड़े थे। राजा इंद्र ने लड़के को कहा, राजा इंद्र, हमारा नाम, दया परखना मेरा काम. A slow learner is usually a normal child in appearance and behaves satisfactorily in many situations of childhood. His health is normal, though in some cases he could be a mongoloid or a spastic. उसने उसको खाना दिया. उसने क्या किया? उसने The major deficiency in case of slow learner is lack of normal academic ability for schoolwork. A slow learner does not learn the academic skills at the normal rate. A slow learner is less interested in books as compared to an average learner. Verbal expression of slow learners are difficult. They have a very short attention span. Slow learners face articulation problems. For them, oral reading is more difficult than silent reading. They have poor expression of thought. They have poor handwriting and face difficulty in motor work. They even face trouble in writing from dictation. They usually leave common prefixes and suffixes while writing. They give inappropriate answers to verbal questions. Slow learners prefer part learning to whole learning and find oral learning tasks easier. They do not have stamina to sit in a class for long periods. How he behaves with the peers. Peers means the brothers and sisters. Means if the brother is eating food properly, is he sitting there? Is he talking to him? Is he taking part in home activities? Like if mother is saying, can he go to the market and buy something independently or not? It depends on the child age and everything. And then we can observe, means we can ask about the friends, like same age group friends, how he behaves with them. The one child of the 5 year can narrate a story, he can run fast, he can jump, catch and everything too, but a slow learner could not do that. Most important factor is the teacher, and if the teacher is able to identify the problem of the child in the beginning itself, then the teacher himself or herself can also suggest the remedy as what needs to be done, and accordingly then the school can follow the strategy. What we have been able to feel out of our experience, that even though the schools have got the counselor, but the best counselor is the teacher himself or herself. The best counselor is the mother or the father. स्लो लर्नर्स बच्चे जो हैं
बहुत देर से आइडेंटिफाई हो पाते हैं, क्योंकि और कोई डिसेबिलिटी जैसे कि डेफनेस हो या फिज़िकल हैंडीकैप है वो बच्चे बहुत जल्दी पैदा होते ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। स्लो लर्नर्स बच्चे जब क्लासेस में, नॉर्मल क्लासेस में जाने लगते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं पढ़ पाते हैं, तब वो बच्चे हमारे पास आते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, जब डॉक्टर्स उनको भेजते हैं। पर यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ और कारणों से नहीं पढ़ पाते हैं, अंडर अचीवर्स रहते हैं क्लासेस के अंदर। अंडर अचीवर्स और स्लो लर्नर्स फ़र्क रहते हैं। स्लो लर्नर्स को इसलिए आइडेंटिफाई करना, एसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक पूरी टीम होती है प्रोफेशनल्स की, जिसके अंदर सोशल वर्कर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, जो कि पूरी टीम इनको एसेस करके फिर उसके बाद कि बच्चा किस लेवल के ऊपर पढ़ता है। Various techniques and tools may be used to identify slow learners. Observation of child's behavior by the teacher as well as experts may help in identifying the slow learner. This observation may be done under simple as well as controlled situations. A child's behavior is not only observed in the classroom but also in the playground and in groups. The information obtained is analyzed and interpreted. As a teachers, when the child is coming to us, we are taking admission. Before that, we are taking interview in general all the schools, and we are giving case study name. And I think most of the teachers are not aware of this term, but it is very, very simple, and we are using it every day. That's only the thing we are giving the title case study. In case study, we are asking about the child, means name, sex, age, and then the milestone which I told you earlier about it. And then we can ask about the family history, like the child had any problem before birth, the mother, was it a normal delivery or a cesarean, because cesarean could be a cause for the brain damage or something, or and what else I can say, means any after means in prenatal we can ask so many things, the child is having epilepsy or not, and then we can ask means the child was suffering from some disease or not, like meningitis or typhoid or something. That could be a cause for the brain damage. Meningitis is a very dangerous fever for the children. Generally they have this kind of fever in the early childhood, or the other problems, means medical record we can keep. And from the very beginning, even during when the child is born, that only time there is one test called the Apgar score. Even the doctor can come to know the child is normal or not, because in Apgar score they can count the heart rate and pulse rate and everything. In that way they can judge, the doctors. And being a teacher, we can ask these things. Scholastic tests are used to find specific problems of children in areas like arithmetic, reading, writing, and language. Standardized intelligence tests are used to assess the intellectual level of the children. Individual verbal tests are preferred to group tests. More than one intelligence test is used to get a true picture of the mental capacity of a child. This test which is lying in front of me is called the Bhatia's test. It has been adapted to suit the Indian conditions. Why these tests were formed initially was because we found that certain children were not able to perform as well as some other children. So to find out why some children were not able to perform well in the classroom or in other situations, certain tests were developed.
Now these tests also are divided into two categories. You have the verbal test and you have the performance test. What you see here is a performance test where you judge how a child will be able to use, with the help of these blocks, you will be able to identify how the child will be able to perform in the classroom, in certain activities, co-curricular activities and all. And the verbal test will include the child's capability to speak, his ability in languages. So if when we use the test have been given a score system, so depending upon the kind of a score the child gets, we derive the child's mental age. So we might have a child who is going to be about 10 years old, but on the test he is not able to perform up to the level of 10 years, and he is able to perform at the level of about 6 years or 5 years depending upon his mental age. So these tests basically help us to derive the child's mental age, which tells us at what level the child will be able to perform, not according to what his age is, but what his performance is going to be. Then subsequently after using these tests, we also go in for an educational assessment where we will be able to know which class the child has to be working in. So this is basically the idea behind the IQ test. थोड़ा बहुत कमी है इसके अंदर. सपोज एक 90 IQ एक नॉर्मल बच्चे में, आपके बच्चे की 80 या 75 IQ है, तो आप जो 10 या 15 का नुकसान है, क्योंकि अभी तक उसको कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिली, बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है इसलिए वो बच्चे ने अचीव नहीं किया. अगर यही बच्चा एक स्पेशल स्कूल के अंदर स्पेशल रेमीडियल क्लासेस के साथ वो बच्चा पढ़ेगा तो वो बच्चा अचीव कर जाएगा. और पेरेंट्स जब एडमिट करते हैं तो वो खुद ही थोड़े दिनों के अंदर ही डिफरेंस नोट करते हैं कि किस तरह से एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग जो है बच्चे को देने से बच्चा इम्प्रूव कर जाता है और बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड करता है. कई बार ये बच्चे जो कि एक नॉर्मल स्कूल से आते हैं स्पेशल कोचिंग करके कुछ साल के बाद वो फिर नॉर्मल स्कूल में जाके अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं. ये 15 है, just remember this, ये 15 ही होते हैं. Education and training of slow learners has always been and continues to remain one of the greatest challenges to teachers and parents. For children who have specific slowness in a specific subject area, remedial teaching is found to be very profitable. राजा पांडु था, क्या नाम था? हाँ, पांडु राजा के पुत्र थे. कौन थे वो? सहदेव. हाँ. नकुल. भीम. और सबसे बड़े भाई कौन थे? Teaching material is carefully graded, keeping in view the capacity and requirement of children. Short, frequent lessons are introduced instead of long lessons. Friendly approach in remedial teaching is highly conducive. Repetition is required to retain the concepts. In order to generate interest and confidence in slow learners, lessons are taught through art, music, and drama. Actually, normal classroom, the teacher is teaching all the students at a one time, reading the lesson in front of them, and whether the child is understanding or not, they are just giving their lesson. But in remedial teaching, if the child is not performing well, then we ask the teacher to call the student, sit with him, explain the thing, and then call the parent, and then give the remedial education.
केवल कमी है तो वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनकी इस कमी को हम रेमेडियल टीचिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग से वो इस कमी को दूर करके दूसरे बच्चों के लेवल पर पहुंच जाते हैं। और हमारे विद्यालय में तो ये बच्चों ने 10वीं तक की कक्षाएं भी पास की हैं, जिसके द्वारा हमने ये पाया है कि उनकी उपलब्धियों में कोई कमी नहीं है। और रेमेडियल टीचिंग इन स्लो लर्नर बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसमें कि हम बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर उसकी जो भी खास कमी है उसको देखते हुए, जनरलाइजेशन ना करके केवल उसकी कमी को देखते हुए उसको रेमेडियल टीचिंग देते हैं, जिससे कि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो भी समझता है कि मैं दूसरे के बराबर काम कर सकता हूँ। वेरी गुड, मैच करो, शाबाश। Special methods of teaching should be used for slow learners. ये क्या है? ये क्या है? एच, यहाँ ढूंढो। हाँ, शाबाश। ये ढूंढो कहाँ पर है इसमें से? ये कहाँ पर है? देखो, वेरी गुड। पढ़ाई में स्लो है इसलिए अब मान के चलते हैं कि बाकी फील्ड्स में ही इज़ वेरी एक्टिव। अदरवाइज बाकी आप इसको स्पोर्ट्स में ले लीजिए और किसी भी एक्टिविटीज़ में ले लीजिए, इसकी अपनी पर्सनल जितनी है, इसका सुबह नहाना धोना, अपना तैयार होना, सब इसकी अपनी हैबिट्स हैं, टॉयलेट हैबिट्स, खाना, तो उसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कोई ये नहीं है कि उसके लिए हमें तैयार करना पड़ता है, कुछ है। तो इसलिए पढ़ाई एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें स्लो है, थोड़ा सा कभी तकलीफ भी होती है, कभी मान के भी चलना पड़ता है कि कोई बात नहीं, इस फील्ड में स्लो है तो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा निकल जाएगा। ई क्या बोलता है? ई फॉर एलिफेंट। एफ ये तो है नहीं कि एक बार मैंने इसको कहा तो कर ले। वैसे भी आप देखें नॉर्मल बच्चों को भी आप ले लीजिए, कोई ऐसा तो होता नहीं कि आप बच्चों को अपने करा लिया तो वो एक ही बार में समझ जाएंगे। उनके साथ भी कई बार बहुत सिरखपाई करनी पड़ती है। हमारे बाकी बच्चे भी हैं, 2 मेरी बड़ी बेटियां हैं, तो अच्छी है पढ़ाई में, सब कुछ है, लेकिन उनके साथ भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऐसा इसके साथ ये है कि क्योंकि ये दिमाग में है कि ही स्लो लर्नर, तो थोड़ा सा इसके साथ ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसको प्यार से, थोड़ा गेम से, थोड़े टेम्पटेशंस दे के, थोड़ा लालच दे के करवा दो कि तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें बड़े इनाम देंगे, पिक्चर ले जाएंगे, बाहर खाना खिलाने। But slow learners cannot be left to the care of a school teacher alone. He has his roots at home. Like all children, slow learners also need support from the family. In fact, a bit more than others. Family has a great responsibility towards meeting the psychological needs of these children. DOLL डॉल। डॉल कैसे मैच होगी? फिश कैसे मैच कर? कोई भी छोटा बच्चा हमेशा लाडला तो होता ही है, और ये भी क्योंकि छोटा है तो बहुत लाडला है। लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि देखो इसको लाड करो, ज़रूरत से ज़्यादा लाड करो, लेकिन इसको ये सोच के लाड कभी नहीं करना कि इसमें कोई कमी है। वो सोच के करोगे तो ये इसको बेचारा का स्टिग्मा लग जाएगा, वो कभी नहीं हम इसको लगने देंगे। ये बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह रहेगा। इसकी हर ज़रूरत पूरी करो, लेकिन जहाँ गलत है इसको टोको, समझाओ, मना करो। हमारे बाकी 2 बच्ची हैं, जैसे बेटियाँ बच्चे हमारे दोनों, कभी हमने उनको भी नहीं एहसास होने दिया था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है। उन्होंने भी अपने आप ही समझा इसको। ये नहीं कि जैसे हमने इसके होते उनको बता दिया, या जब हमें मालूम हुआ तो हमने उनको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इसके पापा बोले कि इन बच्चों को अपने आप समझने दो कि इसमें क्या कमी है। तो इसको हमने इतना ट्रेन किया, इस तरीके से ब्रिंगअप किया कि हमारी दोनों लड़कियों को भी नहीं मालूम हो सका। ब्लैक कुमारी इधर मार। चल मार इसको, मार यहाँ से मार, लाइन के अंदर से। Happy and congenial atmosphere should be provided at home. There should be minimum of tension. Relationships between mother and father and among brothers and sisters should be cordial and respectful. असली समस्या तो आती है जब इन बच्चों के साथ
माता पिता और अध्यापकों को काम करना हो। माता पिता भी इन बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो उनके मन में भी अपने ही बच्चे के प्रति कंपैरिजन की भावना आ जाती है। उनको यही रहता है कि मेरा दूसरा बच्चा बहुत होशियार है, ये तो कुछ नहीं करता। वो उसको डांटेंगे, उसको बार बार कहेंगे क्या है तुम बहुत नालायक हो, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन तो कक्षा में प्रथम आते हैं, तुम भी तो इसी परिवार के अंग हो, क्या तुम इतने अच्छे अंक नहीं ला सकते जितना कि तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यवहार उनके प्रति अन्याय है। There are children who are highly sensitive and whom if you dub as no-gooders or non-achievers, then they may be psychologically affected adversely and they may not grow in a normal way, and they may continue to carry these psychological handicaps, and they may not be able to open up. So their other faculties also may not able to grow. So it does become necessary for us to help the child to grow and be a little more sensitive to the child. The peer group members also should not ridicule. Teachers should be encouraging in particularly for these children, allowing them to give more answers, free answers, give them an opportunity, not ridicule in public, which is very, very important, and the parents also should give all encouragement. In many cases, if a child is a slow learner, because mostly their physical appearance is as that of a normal child, so they go to the regular school, they are in the regular classes, but in a classroom of about 35 to 40 children, the teacher is not able to make out exactly what is wrong with the child. So as he will keep on performing badly in the test, in the performance in the class, then the teacher will realize that something is wrong and she will go to some expert, a professional, she'll go to a psychologist, she'll come to a center for slow learners to find out exactly what is wrong with him. So when they do that, till that time the child has already had the feelings of inferiority, because in the class he is not able to perform well, so the teacher is always scolding him. At home the pressure is of the parents are expecting him to come first, second in the class, and there is this child who is not even able to get marks, let's say he's not able to get 5 out of 50. So what do the parents do? So they are blaming the child, the teachers are blaming the child. So at the young age the child is under a lot of pressure, and that leads to a feeling of inferiority, a feeling of insecurity, because friends are ridiculing him, teachers are making fun of him. At home the parents are not making fun, but they are so concerned about the child, so they have no one else to blame, so they will definitely automatically blame their own child only. So this all leads to a feeling of inferiority and a feeling of insecurity, where the child does not know where he has gone wrong, because it is not that he does not want to study, the fact is that he is not able to understand what is being taught to him. Kala. Kala. Very good. Up there. Good. काला, जी ऊपर ले जाओ, काला, काला, गमला, गमला, गमला. We had taken Shikhar to a doctor because his early signs of development were delayed, and for example his head holding was delayed, and we were worried. And when we took Shikhar to the doctor after examining, he said there's something wrong, and he came to the conclusion finally that he is a mentally subnormal child. And once we got to know that, the implications also were known to us, in the sense that he'll never be able to probably lead in normal life in society with other people, other children. The doctor said he'll not be able to go and attend a normal school. So we were first of all hit by extreme grief. It was a sense of shock and anxiety as to what he will do in the future. ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि पहले तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ये हुआ
और मुझे मालूम हुआ कि ये स्लो लर्नर है, इसमें कुछ ऐसा है, तो बहुत ही तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा हुई कि कैसे होगा, आजकल के ज़माने को देखते हुए इसका क्या होगा, इसका फ्यूचर मुझे बड़ा ऐसे ब्लैक सा दिखने लगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ फिर अपना बच्चा है ये सोचते हुए कि भी अब जब आ ही गया है तो इसके साथ तो अब इसको ठीक करना ही करना है। अब मैं ये लेके बैठ जाती कि भी इसमें तो ये कमी है तो इसको मैं कुछ भी ना करूं, तो आज जो आप इसको देख रही हैं ये ऐसा नहीं होता, ये आपको बिल्कुल डल चाइल्ड मिलता अगर आप इसको अदरवाइज़ देखती। लेकिन फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो खैर बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे भी बहुत समझाया कि देखो आफ्टर हमारा बच्चा है, अब ये इसमें ये कमी है। सपोज़ कोई बच्चा फिजिकली, हमारा बच्चा कोई टांग से लंगड़ा हो जाता, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा, कहीं बाद में एक्सीडेंट में उसकी टांगें निकल जाती तो हम उसे छोड़ थोड़ा देते। तो यही लेके फिर हमने ये सब एक्सेप्ट किया कि इसमें कमी है तो कोई बात नहीं। बाकी बाहर सोसाइटी की जहाँ तक बात है, अगर मैंने अब ये देखा है कि अगर हम पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लें तो सोसाइटी के लिए हम बॉदर नहीं करते उस टाइम। जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी से भी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन एज ए पेरेंट्स मैंने, इन्होंने, इसकी सिस्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें नहीं लगता कि कोई इसके लिए क्या कहेगा, और किसी को कहने का हमने कभी। I think professional help is a must for slow learners, see, because as parents one is not able to see beyond a certain point. There are so many other aspects of development. For example, Shikhar went through programs on speech therapy, on physiotherapy, and we had consulted so many doctors. Now he is coming to the school Balwantara Mehta Vidya Bhavan, where he is undergoing speech therapy, and there are so many professionals here. So I think professional help is a must for children like this. Science. अब मुझे बताओ आप कहाँ रहते हो बेटे? पहाड़गंज। पहाड़गंज। मोतिया खान। जोर से बोलो। मोतिया खान। 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 आगे। झंडा वाला कोट। झंडा वाला कोट। झंडा वाला कोट। हाँ। ला वाला ला। जोर से। ला। जोर से। ला। बोलो कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है? जोर से बोलो। क्रिकेट। क्रिकेट। जोर से बोलो। क्रिकेट। ऊपर क्रिकेट। अब बोलो टा 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 टमाटर। Early intervention is very important, and for this, parents need to accept the child with his strengths and limitations. Professional help is also needed for the parents to understand the ways of dealing with the child and how to have a positive attitude towards them. Teachers too require professional help in order to understand the special techniques used to teach a slow learner.